जब हम कश्मीर में क्राइसिस की बात करते हैं तो ऑन द आउट्स ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि ये कोई चंद दिन पहले या चंद माह पहले की तो बात है नहीं। कश्मीर हैज़ बीन इन क्राइसिस फॉर द लास्ट 72 ईयर्स। लास्ट फ्यू डेकेड्स में 42,000 कश्मीरीज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। इंडिया इस पे अपना एक सर्टेन नैरेटिव पुश कर रहा है अराउंड द ग्लोब, जबकि जो बाकी ग्लोबल पावर्स हैं वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सिचुएशन इन कश्मीर को लेवरेज कर रही हैं। आज हम इस मसले के ऊपर कश्मीरी या पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, बल्कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के इमोशंस तो हमेशा से ही आपस में इंटीग्रेटेड रहे हैं। आज हम इस मोशन के ऊपर कि शुड द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर हैव बीन रिवोक्ड, क्या स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक करना दुरुस्त फैसला था, इसको एक बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल से देखते हैं। आज हम इस पे बात करते हैं एक इंडियन बन के। मैं एक इंडियन पैट्रियट हूँ, मैं इस स्पीच में अज्यूम करूँगा। तो किस तरह से इंडियन रूलिंग क्लास ने मेरे बिलीव्स के, मेरे सेंटिमेंट्स के, मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट जाते हुए ये डिसीजन लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इंडिया का जो एक प्राउड कैरेक्टर था, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने का, एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का, इंडिया से ये छीन लिया है। दिस स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर हैज़ बीन अ प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस। When the question of Kashmir to either join Pakistan or India couldn't be decided, it was until the product of negotiations came up in the form of Article 370. Right? It was temporary, not to get revoked, but to be replaced by an article endorsed by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. But unfortunately, that wasn't allowed to happen all these years because not a single person from the Indian ruling class ever wanted Kashmir's autonomy to be independent of Indian constitution. To counter another argument made in favor of the motion, on every single human development index, Kashmir is much more higher than the Indian average. So to say, with the revoking of Article 370, Kashmir would be allowed to develop further can't be justified because much more advanced than rest of the India. Kashmir can never become integral part of India because Kashmiri people can never be integrated emotionally into India. Instead of being integrated, they are being alienated further. Then the manner in which this was done, then one fine morning you just erase state of Jammu and Kashmir from history. That is unacceptable. Our state has been dissolved, converted into two union territories, centrally administered. And how has this been done in presence of Article 3 of Indian Constitution, which states that no boundary of any state of India can be altered without the concurrence from elected legislative assembly of that state. The state's elected legislative assembly was dissolved, elections not held. By not having elections, you just transferred the power of concurrence to a governor centrally appointed who is not elected. The governor gave the concurrence for dissolving the state, therefore a state is dissolved on the basis of that concurrence by the parliament through passing a resolution. Political leaders who were integral to the Constitution of India were incarcerated. No transport allowed, shops remained closed, schools and colleges were without students and teachers, hospitals were shut down, shortage of medicines, complete communication and media blackout, curfew. This was all happening since the lockdown was imposed in Kashmir. To conclude, the revoking of Article 370 is an assault on Indian Constitution, on democracy, on secularism, assault on federalism, is a complete violation of human rights. This is something that is absolutely and totally not acceptable.